Subhash Karthik, you have to give extempore topic on being a YouTuber is a great skill. What to speak, how to speak. अब मेरा क्या होगा? I'll give you 5 different ways how you can speak instantly on any topic without any preparation. When we stand in front of audience and we need to speak impromptu speech, what is the challenge? The challenge is not only how to speak, the challenge is what to speak. In short, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है कि मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करूं और लोगों के सामने प्रेजेंट करूं। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा, What doesn't kill you make you stronger. Impromptu speech तो एक छोटा सा चैलेंज है। आपके लाइफ में ऐसे बहुत बड़े बड़े चैलेंज आएंगे जो आपको तकलीफ देंगे लेकिन मारेंगे नहीं, लेकिन उस तकलीफ के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जाओगे। Q&A टेक्निक, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पे आपको कोई भी टॉपिक मिले, आपको उस टॉपिक को व्हाट, व्हाई एंड हाउ के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो सपोज मुझे एक टॉपिक मिला, बीइंग अ यूट्यूबर इज अ ग्रेट स्किल। ज्यादा डीप नहीं जाना है, ऊपर ही ऊपर में आप जितना बोल सको बोलना है। फ्रेंड्स, व्हाट इज बीइंग अ यूट्यूबर? बीइंग अ यूट्यूबर मींस यू डिसाइड दैट आई विल मेक माय वीडियो एंड आई विल पोस्ट इट सो दैट मेनी पीपल कैन व्यू इट, मेनी पीपल कैन लर्न फ्रॉम दोस वीडियोस। मेनी पीपल दे से व्हाई बीइंग अ यूट्यूबर? आई वुड से व्हाई नॉट? Being a YouTuber, people are earning more than lakhs per month. Don't you think that becoming a YouTuber is a new dream work that anybody can do? How to be a YouTuber? It's very easy. You go to Google, search YouTube, go to the YouTube website, and there you will get the option to start your new channel. Before you start your new channel, please select what could be the subject line, how you want to serve the whole world. दोस्तों, आप देख रहे हो कि मैं कैसे व्हाट, व्हाई और हाउ को लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। अप्रिसिएशन एंड द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, इवन बिफोर व्हाट, व्हाई एंड हाउ, उसके पहले जब आपको टॉपिक मिल रहा है ना, यू स्टार्ट स्मार्टली। कैसे? मैं बता रहा हूं। इट हैज बीन अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली वांट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर एंड द चीफ गेस्ट एंड ऑल द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट दैट you all have given me the opportunity to speak before the audience. So what I am doing? इससे ना एक तीर से दो निशाने हो रही हैं। कैसे? First, you are getting wonderful start and second, you are buying time. आपको टाइम मिल रहा है and this is all about extempore. इसके बाद आप टॉपिक को स्टार्ट करो। आई थिंक आपके 3 से 4 मिनट तो ऐसे ही हो जाएंगे। You know the problem is, लोग डर जाते हैं। जब आप डर जाते हो तो आप वहीं खत्म हो जाते हो। दोस्तों, ये स्किल को सिर्फ जानना नहीं है, ये स्किल को प्रैक्टिस करना है। हमारे 5 डे वर्कशॉप में आइए, मैं आपको स्टेज दूंगा जहां पे आप प्रैक्टिस करोगे हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, करेक्टली एंड इम्प्रेसिवली। प्रोज एंड कॉन्स, जो भी टॉपिक हमें मिला है उस टॉपिक के प्रोज एंड कॉन्स, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, टॉपिक तो आपको पता ही है, जस्ट बाई सिटिंग एट होम एंड क्रिएटिंग वीडियोज यू कैन रीच मैक्सिमम पीपल इन द यूनिवर्स। बीइंग अ यूट्यूबर, जस्ट सिटिंग एट होम यू कैन अर्न मनी। इट इज अ टाइम टेकिंग इवेंट because you never know when will your channel be published, get monetized, कब ये लोगों के पास पहुंचेगा, because the competition is huge. Now maximum people are getting into YouTube and now YouTube has become a big market and to become a center of attention is a big challenge. Future contribution और future opportunity. So आप हर टॉपिक के साथ future opportunity को जोड़ सकते हो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा टॉपिक है बीइंग अ यूट्यूबर। गाइज, बीइंग अ यूट्यूबर, इट हैज अ बिग future opportunity, guys. People can earn, people can become famous, popular, people can have a better life ahead. Then ये contribution मैंने क्यों बोला, future contribution? Suppose आपका टॉपिक किसी पर्सनालिटी के नाम में हो। जब वो पर्सनालिटी जिंदा थे तो उन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचा और बहुत सारे वैल्यू एडिशन काम किए ताकि फ्यूचर के लोगों को इससे फायदा मिले। दैट इज फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। डोंट यूज ऑल द टेक्निक्स
You remember that second technique, that is appreciation and sense of gratitude. You add that, and with that technique, you take technique number 1 or 3 or 4 or 5, maximum 2 techniques को एक बार में use कीजिए, because adding those 2 techniques will make your topic go for 3 to 4 minutes, and that's enough. Dissociative thinking. आपके पास है एक टॉपिक, आपको क्या करना है, आपको रैंडमली अपने लाइफ से किसी भी टॉपिक को पकड़ना है और इस टॉपिक के साथ जोड़ देना है. सपोज द टॉपिक इज बीइंग अ यूट्यूबर. अब मैं बाइसोसिएटिव थिंकिंग के लिए एक और थॉट को सोच रहा हूं रैंडमली, मोबाइल. सो आई कैन टेल विद द मोबाइल आई कैन बी अ यूट्यूबर, आई कैन इवन अर्न बाय मेकिंग माय वीडियोस थ्रू माय मोबाइल. आर यू गेटिंग दैट कि बाइसोसिएटिव थिंकिंग क्या होता है? द रैंडम वर्ड जो आप चूज कर रहे हो वो कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ यूट्यूबर or emotion. So being a YouTuber, I'm going to make my videos which is linked to emotion, because people are emotional, and when I will make videos, people can link with me, people can relate with my videos, and I can connect with their emotion. Are you confident in group discussion? मेरे इस वाले वीडियो को जरूर देखिएगा. इसमें मैंने कुछ ऐसी tips and techniques दिए हैं which will enhance your group discussion skills.